These are the questions marked which we need to do. Starting from question number 2, I'm going to use the whiteboard for solution. Okay. So the first question number 2 is already done. Is it done? Yes, we did it on previous on Thursday. Achha. So was it done? Largest whole number. Yes. So what we need to find out? What we need to find out? Largest whole number that is a factor. So we need to find out HCF. ठीक है, लार्जेस्ट होल नंबर दैट इज अ फैक्टर. ये दोनों नंबर हमें हिंट दे रहे हैं. लार्जेस्ट होल नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ बोथ. ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 156 and 168. Do you want to solve it or is it fine? Mohit, what about you? Ma'am, I checked it. It's solved. All right. So Mohit, ठीक है ना, वैसे अगर ना भी solve हो तो you know how to find out HCF of these two numbers. ठीक है, how do we know we need to find out HCF? There are two hints in the question. One is largest whole number. So largest is highest. ठीक है, and second hint is factor. Factor है तो HCF निकालना. ठीक है, so now question number 4 is explain why 1040 is the smallest non-zero whole number that is divisible by. एक तो स्मॉलेस्ट वर्ड है और एक है डिविजिबल बाय. सो किसकी तरफ इशारा है? क्या करना है हमें? व्हाट डू वी नीड टू डू? स्मॉलेस्ट है तो इट इज एल, यानी कि एलसीएम है. डिविजिबल है तो इसका मतलब है डिविजिबल या मल्टीप्लिकेशन टेबल हम हमेशा एलसीएम में कहते हैं. वी नीड टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन के एलसीएम ऑफ 80 and 104 is 1040. ठीक है, this is what we need to do. Explain why 1040 is the smallest non-zero whole number that is divisible by both 80 and 104. So what do we need to do? We need to find out LCM of 80 and 104, and that LCM would be 1040. So that is the proof of the answer. Okay, so how we are going to solve it? Let's do it together. Question number 4, exercise 1C. Okay, exercise 1C. This is question number 4. So what do we need to do? There are two numbers, 80 and 104. So the first step would be prime factorization. So we will do prime factorization of 80 and 104. Okay, so if you do prime factorization of 80, so this is divisible by 2, right? 2 into 40, 2 into 20, then 2 into 10. Okay, this is now easy for you. Then 2 into 5, and then definitely 5 into 1. So what is prime factorization of 80? It is 2 raised to power 4, या फिर आप लिख लें 2 cross 2 cross 2 cross 2 into 5. Proper working is very important, right? So now we need to write down prime factorization of 104. So 104 will be divisible by 2. What is half of 104? 52. Now what is half of 52? Yes, ma'am. Wait. What is half of 52? Ma'am, half of 52 is 26. 26. Very good. So it will be 26. Then what is half of 26, Abrish? It is 13. 13, and then 13 is also a prime number, so 13 ones. So 104 ki prime factorization is 3 2s and then 13. So now if I write down common factor, so that common factor will be these 3 2s, right? So common factor is 2 2s are 4, 4 2s are 8. So now if I write down non-common factor, so non-common factor is 2 into 5 into 13. So 5 2s are 10, 10 into 13 is 130. So LCM of these two numbers is 8 multiplied by 130. और अगर आप इसको multiply करें तो 0, 8 3s are 24 और ये 1040 आता है. ठीक है, so since how you're going to answer it, this question, you will say since LCM of 80 and 104 is 1040, so अब आपने वही सारी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना, वही आपने यूज करनी. क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या थी? So आपने लिखना है so 1040 is the smallest. So 1040 is the smallest. वही जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, is the smallest non-zero number, smallest non-zero number that is divisible by both, ठीक है, 80 and 104. Is it making sense with the solution? Yes. Is it clear? Right? So this is how you are going to solve it. Abdul Moeed beta, is it clear? Yes. Yes, ma'am. All right.
So I have taken the screenshot. I will share it with you. So now let's look at the fifth question. Now the questions are changed a bit, you know. So question number 5 is a number has exactly 8 factors. A number has exactly 8 factors, 2 of which are 10 and 125. We need to list all the factors of that number. हमें वो number नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि there are 8 factors and 10 and 125 are the factors of that number. ठीक है? So how we are going to find out? Basically, we are going to write it down like this. अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व ऐसे करते हैं. Let's say question number 5 we are going to do. So we know that 2 factors are. Acha, because this exercise is related to HCF and LCM. So can you tell me कि I have these two numbers 10 and 125. Okay, these are the two factors. We need to find out the number. So do we need to find out HCF or LCM of these two numbers? Ma'am, HCF. Okay, do you think the number would be smaller than the factors or will it be bigger than the factors? Ma'am, ये number हमने निकालना ना. We don't know the number. it will Do be you bigger. think the factors are do you think the factors are smaller than the number or they are bigger than the number? They are smaller than the number. They are smaller. तो हमने वो number find out करना है. इसका मतलब है जो हमने find out करना है, that is a bigger number. So if that is a bigger number, so then we need to find out LCM. ठीक है, बिकॉज इस नंबर के वो फैक्टर्स हैं बिल्कुल जस्ट लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इस नंबर से वो डिविजिबल है. ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट एलसीएम. या आप सिर्फ ये लॉजिक ध्यान में रखें कि बिकॉज देयर आर टू फैक्टर्स गिवन एंड द नंबर विल बी बिगर. अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ तो स्मॉलर नंबर आएगा. अगर आप इन दो नंबर का एचसीएफ निकालें तो 5 वुड बी द एचसीएफ. अब 5 तो वो नंबर नहीं हो सकता. ठीक है, सो इसका मतलब है यू नीड टू टेक एलसीएम. लॉजिकली सोचें तो यू नीड टू टेक एलसीएम. ठीक है, सो टू फाइंड आउट द नंबर्स, so I'm writing as a hint to find out the number. वही ये बात समझ आई है बेटे? टू फाइंड आउट द नंबर. Yes, ma'am. ठीक है, वी विल टेक एलसीएम. इसके वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा लॉजिकली सोचना है. वी विल टेक एलसीएम ऑफ 10 एंड 125 क्योंकि वो नंबर डेफिनेटली अपने फैक्टर्स से बड़ा है. देखिए, लेट्स राइट इट डाउन इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स. 10 के फैक्टर्स क्या है? 2 into 5. और 125 के क्या फैक्टर्स हैं? 125 इज अ क्यूब नंबर. किसका क्यूब है 125? 5. 5 का क्यूब है. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 125. व्हाट वुड बी एलसीएम? What is the common factor? LCM होता है ना, common factor multiply by non-common factor. What is the common factor? Common factor is this 5, right? So 5 is a common factor and the rest of the numbers 2 into 5 into 5, they are non-common factor. So 125 को 2 से multiply करें तो LCM is 250. इसका मतलब है वो number जिसके 8 factors हैं वो 250 है, right? Yes. ठीक है, so now we can recheck also, we can verify also, okay, is this the answer? So how can we verify? We can find out how many factors 250 is having. So अगर हम factor pairs लिखें 250 के, so one factor pair is 1 into 250, second factor pair is 2 into 125, Yes. right? Then 5 into 5 5 into into 50, 5 into right? 125. नहीं, 5 into 50 ना, 125 तो 2 के साथ है pair, right? So 5 into 50. Then the next number which is divisible is 10. So 10 into 25. These are the 8 factors of this number. ठीक है, so then we will say hence the number is, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि find out that number, hence the number is 250. ठीक है, so we हमें उन्होंने basically there were two conditions in the question. कौन सी दो conditions थी? एक condition थी 8 factors, एक ऐसा नंबर है जिसके 8 factors हों, और दूसरी condition ये थी कि 10 and 125 are the factors. ये दो conditions हमें क्वेश्चन में गिवन थी. ठीक है, अब देखो 8 फैक्टर्स जो हैं वो तो बहुत से नंबर्स के हो सकते हैं. दिस इज अ यूजलेस हिंट. ठीक है, बट दिस इज अ यूजफुल हिंट व्हेन दे आर सेइंग 10 and 125 are the factors of that number. So we utilize this information and we said because 10 and 125 are the factors, so we can find out a number which is LCM of these two numbers. ठीक है, so हमने LCM निकाला और that LCM had 8 factors, so we said that this is the number. ठीक है बेटे, is this clear? Yes. All right. So what about Moeed? Moeed, beta, is it clear? Yes, ma'am. So then now just look at this one. The next question is also
The similar question. A number has exactly 12 factors. Now we are looking for a number which is having 12 factors and two of which are 40 and 100. List all the factors of the number. ठीक है ना, सिर्फ हमने number निकालना है बल्कि उसके factors भी लिखने हैं. So how we are going to solve it? This time the numbers are 40 and 100. So same method, right? So 40 and 100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? So because we need to find out the number first ताकि हम उसके सारे factors लिख सकें, so we need to do prime factorization and find the LCM of two factors which are given. Okay, so this time the two factors which are given are 100 and 40 and 100. Okay, so they told us that 40 and 100 are the two factors, and they also told us that there are exactly कितने factors हैं? 12 factors. उस number के 12 factors हैं, and these two are the factors. So first of all, we need to do the prime factorization so that we can find out the LCM. So 40 and 100. So if you can decode them, so you can do it mentally. अगर नहीं कर सकते तो just do the prime factorization. 40 factors are 2 multiply 2 2 into multiply 2 and 2 multiply 2 multiply 2 multiply into 5. 5. Okay. So this is 8. 8 into 5, 40. Very good. So what are the factors of 100? So 2, 50 हो जाएगा, फिर 2 and then 5 into 5, right? ये factors are 100 के. If you cannot decode them like this, so then you can do prime factorization. Now what is HCF? HCF is, LCM is, LCM निकालना. 2 5. LCM is common factor multiplied by, Mohit bete please participate in the class. Common factor multiplied by non-common factor. What is the common factor? What are the common factors? So common factors are 2 and 5. 2 and 5. So 2 and 5, 1, 2 या 2 times 2. No, 2 times These 2. are the common. 2 times 2. ये भी है और ये भी है ना. ये दोनों common है और 5 also. So what are the non-common factors? Just 2 and 5. 2 and 5. 2 and 5. ठीक है. So if you multiply, this is 4 5s are 20 and this is 10. So this number is 200. ठीक है. 200 वो number है जिसके ये दोनों factors हैं. ठीक है. So now if we write down all factors of 200, because they told us there should be 12, all factors of 200. So factor pair की form में अगर हम लिखें, so the first factor pair would be 1 and 200. Second factor pair would be 2 and 100, right? So then 3 is not the factor. We can write down 4 into 50. So then 5 is also a factor. So 5 into, yeah, I think so previous classes में maybe 5 और 4 में पढ़ा होगा factor pairs लिखना, right? So 5 से 5 and 40. So then 6 is not a factor pair. 7, 8 is not. 9, 10. And 10. Right, 10 into 10 into 10. 20. 10 into 20. 10 into 10 तो 100 होता है ना. 10 into 20. 20 ठीक है. 20. We should still be having more. 10 के बाद और कौन सा factor होगा इसका? 15. Ma'am, इस 20. 15 नंबर 20 तो लिख दिया ना बेटे. बीच में कोई मिस तो नहीं किया हमने? 5 के बाद 6 7 8. 6 7 8 में तो नहीं हो सकता ना. What about after 10? 10 से 20 के बीच में कोई factor, दो factors हमारे पास रह गए हैं. Like एक factor pair missing है. What about 12? Is it divisible by 12? No, No, ma'am. No. What about 8? 8. 8 से divisible है? 8 is 200 divisible by 8? 16, हाँ जी, 8 से divisible है. 40 और 8 5s are 8 and 25 हमने मिस कर दिया यहाँ पर. ठीक है, I'm writing it below 8 and 25. ठीक है, so there are exact 12 factors. You can count them also. ठीक है, so these are the 12 factors of this number 200. बेटे any question? No. ठीक है, is it clear, मोहित? हाँ, पुरुष की तो मुझे आवाज आ रही है बेटे, आप बताएं. All right, so let's go on to question number, ये 6 question था. Question number 7. Oh, 7. 7th question. Question number 7 is that we need to find out the smallest value of k such that the LCM of k and 6 is 60. k and 6 का LCM is 60. ठीक है, तो हमने क्या करना है, मिसिंग वैल्यू निकालना. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिकॉज दिस टाइम वी डोंट नो द सेकेंड नंबर बट वी नो द LCM. ठीक है, सो वी डोंट नो व्हाट इज a, व्हाट इज k, लेकिन हमें इन दोनों का LCM पता है
और दैट LCM इज 60. 6. ठीक है, हमें ये पता है कि दो नंबर्स हैं, इनका LCM 60 है. सो फर्स्ट स्टेप में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. So in the first step, what we are going to do, we will do prime factorization, and then we will find out k, what should be the value of k so that LCM is 60. So in the first step, we will do prime factorization. So 6 की prime factorization करें तो this is 2 cross 3. ठीक है, और 60 की prime factorization अगर करें तो क्या आता है 60 की prime factorization? We can just do it. It is 2 into 30. ठीक है, 2 into 15 and 3 into 5, right? So the LCM is 2 into 2 into 3 into 5. अब उन्होंने हमें कहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के. ठीक है, आई थिंक सो यही कहा है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के. सो व्हाट टू डू? अब हमने ये देखना है के की क्या वैल्यू होनी चाहिए. सो व्हाट आर द मिसिंग वैल्यूज? देखो, दिस 3 इज ऑलरेडी देयर, सो 3 को हमें के में डालने की जरूरत नहीं है. दिस 2 इज ऑलरेडी देयर, राइट? 5 इज मिसिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम चेंजिंग द कलर ताकि आपको क्लियर. एक तो हमें नजर आ रहा है के में 5 होना चाहिए. अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. 3 तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब 3 और 5 आर रिजॉल्व्ड. वी आर डन विद 2. इफ आई विल, बिकॉज देयर आर 2 2s इन द LCM, अगर मैं एक 2 यहाँ पर लिखती हूँ तो ये तो कॉमन फैक्टर बन जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा. इसका मतलब आई हैव टू राइट अनदर 2. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बिकॉज द फर्स्ट ऑल तो मैं एक 2 मुझे और चाहिए, लेकिन जब हम एक 2 के में लिखते हैं तो वो तो उसका कॉमन फैक्टर बन जाता है ना, because there is 2 in 6 also. So इसका मतलब ये एक दफा यहाँ आ गया. So this 2 is still missing, right? So for this 2 I will put another 2 in k. So what is the value of k? Value of k is 2 cross 2 into 5. So ये कितना आता है? K is 2s are 4, 4 5s are 20. ये चीज क्लियर हुई कि why we are putting, that's right, 20 is the answer. ये चीज क्लियर हुई है बेटे, why we are using 2 times 2? Why not 1 time? अब्रिश, ये बात आपको समझ आई है बेटे? Not very well. We can do the multiple of 20 and 60 or 20 and 5. नहीं, ये बात आपको समझ गई. ये 5 तो आपने मुझे खुद ही बताया कि 5 होना चाहिए के में. So why we are putting 2 times? क्योंकि जब हमने पहली दफा 2 पुट किया ना के में, तो ये तो कॉमन फैक्टर बन गया. ठीक है, बिकॉज देयर वाज अ 2 in 6 आल्सो. 6 में 2 ना होता ना तो फिर तो ये एक दफा ही लिखना इनफ होता. लेकिन बिकॉज देयर इज अ 6 in 2, सो ये तो उसका कॉमन फैक्टर बन के अंदर आ गया. अभी 1 2 इज स्टिल मिसिंग, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन अनदर 2 in k. ठीक है बेटे, सो ये एक 2 इज कॉमन फैक्टर and the rest of the 3 numbers are like, this is the common factor, this 2, and these 3 are the non-common factor. Ma'am, now for verification we can do the multiples of 6 and 20. For verification we can just do it, because 6 is 2 into 3 and k is 2 into 2 into 5. So we can do this, you know. This is 20 now, so 6 और 20 का वैसे भी आपको पता है LCM is 60. Yes. ठीक है, so this is verification. Very good. So you can always verify them also. ठीक है, so this was question number 7. So moving on to question number 8. I think so 8 आपके curriculum में है या नहीं? Let me see. G8 is also. Question number 8 is that the numbers 792 and 990 are written as the product of their prime factors. ठीक है, prime factorization is already done. So we need to explain why 198 is the greatest whole number that can divide both. इस statement से मुझे ये बताएं 198 is the greatest whole number that can divide both. वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि 198 is smaller. So is 198 HCF or LCM? The two numbers are HCF. 792 and 919. ठीक है, I told you in the first day it is HCF. So हमने ये prove करना है कि इन दो numbers का HCF जो है वो 198 है या नहीं. That is what we need to prove. How do we know कि we need to prove HCF? Because 198 इन दोनों numbers से smaller है और हमने पहले दिन ही ये बात सीख ली थी कि HCF is smaller than the smaller number and LCM is bigger than the bigger number. ठीक है, so how we are going to solve it? Question number 8 को, इसकी prime factorization is already given. The two numbers are 792 and 990. ठीक है, इन दोनों की prime factorization भी हमें नहीं करनी. They are just asking for the explanation. 792 is 2 cube into 3 square, 2 cube into 3 square into 11. ठीक है, and 990 is 2 into 3 square into 5, 2 into 3 square into 5 into 11.
ठीक है. सो हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि इन दोनों का HCF 198 होना चाहिए. सो फाइंडिंग HCF. ठीक है. So if you find HCF, तो HCF is common factor. ठीक है. So what is common in these two numbers? इनकी prime factorization is in front of you. What are the common numbers? What is common from 2? Ma'am, 2. 2 is common. ठीक है. In 792, 2 is coming 3 times, but in the other number it is coming 1 time. So 1 time will be common. So it is 2. ठीक है. Ma'am, So what 3. is common in 3? 3 square is 3 common. will come 2 यहाँ पर time भी in that CF. that's right. दोनों में 3 2 times आ रहा है, तो 3 square is common. Ma'am, ठीक है. 11. So 5 is not common because it is coming only in the second number. So 11 is also common. So ये Yes. आपके पास HCF है. 2 into 3 square is 9 into 11. So 9 2s are 18. या 11 9s are 99 होता है. 99 को डबल करें तो it is 192. Right? 198. Sorry. 198. That's right. 2 into 99. So ये आपके पास आ जाएगा 198. So now you are going to answer according to the question. Question उन्होंने क्या किया था कि you need to find out the greatest whole number. So you will say, so hence 198 is the greatest number because ये HCF है ना, highest है. So greatest number that can divide, ये उन्होंने question में लिखा हुआ, that can divide both 792 and 990. ठीक है, because this is the HCF of both numbers. ठीक है. Any question in this? Is it clear? Yes. मोहित आपको भी बेटे? Is it clear? Right? Yes, ma'am. मोहित आपका ध्यान इधर ही है ना? Yes, अच्छा, ma'am. now just look at this one. 10th question is the similar question जैसे हमने पीछे एक question किया था, 2 question किए थे. A number has, or बल्कि we need to do 9th question. अच्छा, 9th question is the numbers 176 and 342 written as the product of their, find the smallest non-zero number. So what is this smallest non-zero number? Is it HCF or LCM? Smallest non-zero number that is Ma'am, divisible by ma'am, I smallest. Hmm. Ma'am, Is it LCM. HCF or LCM? LCM. ठीक है. LCM is lowest and this is also smallest. ठीक है. So we need to find LCM of these two, and anyhow you can see the change in the statement. यहाँ पे चलें greatest और smallest के अलावा भी यहाँ पर लिखा हुआ है that number divide both these exactly. ठीक है. That number is a multiple और यहाँ पर लिखा हुआ है that number is divisible by both. उस number से ये दोनों divisible हैं. इसका मतलब है वो LCM है इनका. ठीक है. इनका multiple है. Right? So we need to find LCM. So let me write down the data. Question number 9. So question number 9 में the two numbers are उनकी prime factorization is also given 176 and 342. ठीक है. इन दोनों नंबर, ये दोनों numbers हमें given है. We need to find out the LCM. So इनकी prime factorization देख लेते हैं. The number will be bigger. So हमें multiply भी करना है. 2 की power 4 into 11. 2 की power 4 into 11 and the prime factorization of 342 is 2 into 3 square into 19. 2 into 3 square into 19. So what are the common factors? Wait, please unmute your mic and answer the questions. Mohit and Abrish, what are the common factors? हमने Ma'am, LCM निकालना है. 2. 2 is the common And factor. 2. Yes, और कोई है just 2 common is. factor? Just 2 Just is. 2. ठीक है. So now what is the non-common factors? What are the non-common factors? Ma'am, 2. 2 की power 3. ठीक है. This 2 की power एक 2 is common factor, so the rest of the 3 2s are non-common factors. 3 square 3. into 11 into 19. So this is such a big number. ठीक है. LCM of these two is very big number. So अगर आप इसका LCM निकालें, so the LCM would be 2 raised to power 4 into 3 square into 11. I'm combining common and non-common factors. ठीक है. So we can solve it. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में पेपर में कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते. ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस की हैं पेपर में और आंसर यहाँ लिख दिया, बिकॉज दिस वुड बी आई थिंक सो 5 digit number. ठीक है. सो दिस इज अ 5 digit number in the answer. So if you make a small mistake while taking the, for example, carry, अक्सर students ऐसी गलती कर देते हैं. If you will make a mistake in the multiplication and you will write down the answer directly here, Ma'am, the answer that is answer is, for example, wrong. Abrish, 1 second.
if like you are calculating, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो अभी नहीं है ना, so when you are multiplying these numbers, do it in 2 or 3 steps. Write down the intermediate answer ताकि आपकी टीचर आपको मैक्सिमम नंबर दे सके, instead of writing the final answer and that answer is wrong maybe because you have made a mistake. ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपने यहाँ पे पहले इसको स्टेप में लिखना है, लाइक 2 की पावर 4 आपको पता है क्या होती है, 16 होती है, ठीक है। 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 11 इंटू 19। इसके बाद भी एक स्टेप में जस्ट डू द इंटरमीडिएट मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मे भी मल्टीप्लाई कर लें या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। डोंट टेक रिस्क, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं और वो गलत होता है और वो फिर आपको पूरा उसका नंबर कट जाता है, ठीक है। सो अब्रिश वाज टेलिंग द फाइनल आंसर। अब्रिश, व्हाट इज द आंसर बेटे? Ma'am, the answer is 30,096. 30,096, ठीक है। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। मोहित, आपको भी ये पॉइंट समझ आया? पेपर में हमेशा डायरेक्ट आंसर कभी नहीं लिखते हैं, इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस लाजमी लिखते हैं, ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है बेटा? Okay, ma'am. All right, so there is another, I think so 10th question we need to do. Question number 10 is a number has, ये बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। So I will ask you how to solve it. A number has exactly 8 factors, 2 of which are 4 and 26. List all the factors of the number. So सबसे पहले तो हमें number find करना है. So how will we find out the number? What to take, LCM या HCF? Two factors. Ma'am, HCF. HCF लेंगे तो स्मॉलर नंबर आएगा, इसका HCF Ma'am, 2 है। LCM. LCM हमने वो सबसे पहले नंबर फाइंड आउट करना है जिसके ये दो फैक्टर्स हैं, तो वी विल टेक LCM। व्हाई? बिकॉज लॉजिकली अगर आप HCF लेंगे तो आंसर 2 है। आप 2 के तो इतने फैक्टर्स 8 फैक्टर्स तो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब वी नीड टू टेक LCM, ठीक है। 4 and 26 है क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 है, so we will take LCM first. So we will write down factors of 4 and what was the other number, 26, ठीक है। So 4 can be written as a prime factors, in prime factors as 2 cross 2. So if you can find out what are the factors of 23. Ma'am, it is a prime number. 26? No, 1 and 23. नहीं, 1 and 26, sorry, मैंने बोलते हुए 23 बोल दिया, but 26, sorry. What are the prime factors? 13 and 2. 2 and 13, ठीक है। 26 है बेटे ये। So what is LCM? Common factor into non-common factor, ठीक है। So what is the common factor? इसमें common factor क्या है इन दोनों में? 2 is the common factor, right? What are the non-common factors? Ma'am, the 13 and 2. 13 and 2, ये तो common factor, this is non-common factor, 13 and 2. So LCM is, this is 26, 26 को double करें तो this is 52. इन दोनों नंबर्स का LCM 52 है। अब हमें पता चल गया है 52 इज द नंबर जिसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए, आई डोंट नो, 8 फैक्टर्स, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ 52, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 52? व्हाट आर द फैक्टर पेयर्स? फर्स्ट इज 1 and 52. 1 26, 2 2 and 13. 2 and 26. 2 and 26, then 4 and 13, Nice. ठीक है। 4 and 13, लेकिन उन्होंने तो हमें कहा है कि ये नंबर ऐसा है जिसके 8 फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 52 is having only 6 factors. हमें तो ये ऐसा नंबर चाहिए था जिसके 8 factors हों। इसका मतलब है 52 is not that number. So what we will do? We will try again, right? And how we can do that? हमें ये पता है कि 52 का ही कोई मल्टीपल है, ठीक है। So 52 नहीं है तो हम क्या ट्राई करेंगे, इसको डबल कर लेंगे, लेट्स से 104। ये बात समझ आ रही है? जरूरी नहीं है कि जब आप एलसीएम निकालें तो वो ही वो नंबर हो, ठीक है। सो एलसीएम तो सबसे छोटा मल्टीपल है ना। सो देर आर मेनी अदर नंबर्स जिनके ये दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 and 26, ठीक है। सो वी ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें 52 मिला। जब हमने 52 के फैक्टर्स निकाले तो देयर वर ओनली 6 फैक्टर्स, बट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि दिस ये ऐसा नंबर है जिसके 8 फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है 52 इज not the number we are looking for. So now what we are going to do, we will find out multiple of 52. We will try 104. Let's say 104 के अगर हम फैक्टर्स लिखें तो क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? 1 into 104, 2 into 52, then 2 into, oh sorry, 3 से हो सकता है? नहीं, 4 से होगा, I believe. 4 into 4 2s are 8, 24, 4
6 are 24, right? 4 into 26. So then 8 is a factor. Yes. जब 4 factor होता है तो mostly 8 भी factor होता है. 8 into 8, 1s are 8. मैं 1 and 16. 8 yes. 1s are 8, so 2 24 and 8 3s are 20. 8 3s are 24, so 13 होगा. ठीक है, 8 and 13. Okay, these are the factors of 104. So now you can see 104 is having exactly 8 factors और इसके ये दो factors आपको नजर आ रहे हैं 4 and 26. ठीक है, so इस question से हमें ये पता चला है, इससे पहले जो हमने दो question किए थे उसमें डायरेक्ट एलसीएम वाज द आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये पता चला है कि एलसीएम समटाइम्स कैन नॉट बी द आंसर, बिकॉज देखो ना, अगर हम कहें एक ऐसा नंबर बताएं जिसके दो फैक्टर्स हैं 2 and 3, सो सबसे पहले तो हमारे ज़हन में हम 2 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे ज़हन में आंसर आता है कि 6 आंसर है, लेकिन अगर 6 के फैक्टर्स कम है, लेट्स से 6 के फैक्टर्स 4 हैं सिर्फ, बट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर टू कंडीशंस, एक तो वो कह रहे हैं कि फैक्टर्स है, सेकंडली नंबर ऑफ फैक्टर्स की भी कंडीशन है, सो फिर हम 6 से आगे चलेंगे ना, फिर हम देखें व्हाट इज द नेक्स्ट मल्टीपल, तो नेक्स्ट मल्टीपल इज 12, then we will find out the factors of 12 and so on. ठीक है, अगर यहाँ पे भी हमारी कंडीशन मेट ना होती तो फिर हम क्या करते, हम इसका नेक्स्ट मल्टीपल 52 into 3 करते, यानी 52 के हमने मल्टीपल्स निकालने हैं सारे. ठीक है बेटे, इज दिस मेकिंग सेंस अब्दुल मोईद एंड अब्रिश? Yes. Yes, ये चीज ma'am. समझ आई? ठीक है, सो समटाइम्स दिस आंसर कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज वी हैव टू कंडीशंस ना, हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक क्या है कि ये दोनों उसके फैक्टर्स हों. ठीक है, तो फैक्टर्स की कंडीशन तो 52 मीट कर रहा है, बट जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना उसकी कंडीशन 52 मीट नहीं कर रहा था. ठीक है, तो फिर इसलिए हमने 52 का अगला मल्टीपल ढूंढा, सो 52 को 2 से मल्टीप्लाई किया. अगर 104 के 8 फैक्टर्स ना होते तो फिर हम क्या करते, 52 का तीसरा मल्टीपल निकालते, यानी 52 को 3 से मल्टीप्लाई करते. ठीक है बेटे, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 अगर हमने करना है तो लेट्स से 11 भी करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 175 एंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज दिस. हमें एलसीएम भी पता है दो नंबर्स का और उन दो नंबर्स का हमें HCF भी पता है. सो दे आर आस्किंग यू बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये तो कॉमन सेंस की बात है कि दोनों नंबर्स अपने HCF से पढ़े हैं. ठीक है, फाइंड द टू नंबर्स. ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड दोज टू नंबर्स, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक बहुत ही फेमस रिलेशनशिप है, लेट मी राइट इट डाउन बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11. ये हम इवन व्हेन यू गो इन बिगर क्लासेस, जब आप ओ लेवल्स या मैट्रिक की तरफ जाते हैं तब भी ये बहुत कॉमनली यूज होता है. अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें ना, दो नंबर्स का HCF और LCM मल्टीप्लाई करें तो द आंसर इज सेम एज व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स. लेट्स से द टू नंबर्स आर A and B. अगर हम दो नंबर्स का HCF और LCM मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर वही आता है जब हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है. फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से द टू नंबर्स आर, ये आई विल अरेज इट. ठीक है, ये लिखा है लेकिन आई विल अरेज द एग्जांपल लेटर ऑन. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज ये आप पहली दफा देखने में आपको अजीब सी बात लगती है कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो और उनका HCF और LCM मल्टीप्लाई हो, तो हाउ कैन दे बी सेम. ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल द टू नंबर्स आर, लेट्स से छोटा सा कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 6 and 10. ठीक है, let's say the two numbers are 6 and 10. Now what is the HCF of 6 and 10? क्या HCF है 6 और 10 का? What is the HCF of 6 and 10? Moiz beta, please pay attention. Abrish, what is the HCF of 6 and 10? Ma'am, HCF. Ma'am, first we'll take their factors. Ma'am, 2. ठीक है, 2 into 3 and 2 into 5. 2 is the HCF. Now what is Ma'am, 2. LCM? That's right, 2 is the HCF. Now what is LCM? 2 is a common factor. 5 3s are 15. 15 into 2 is 30. Ma'am, 30. 30. ठीक है, अब अगर आप इस रिलेशनशिप को देखें, सो अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 6 into 10 है. ठीक है, और इसका HCF और LCM 2 into 30 है. सो यहाँ से भी आपके पास 60 आता है और यहाँ से भी आपके पास 60 ही आता है. तो ये आपने याद रखना है, दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई भी दो नंबर्स है ना, तो अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो उसका आंसर आएगा वही आंसर आएगा अगर हम उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें. ठीक है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि दिस इज बेसिकली अ करेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, ये आपने याद रखना है. इसी रिलेशनशिप को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ना भी लिखते तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती, बट आई वांट यू टू रिमेंबर इट. ठीक है, सो दे हैव गिवन यू, now back to the question, they are saying highest common factor is 175 and LCM is, जो दो numbers हैं जो हमें नहीं पता, and their LCM is 12,600. So सबसे पहले तो आपने इन दोनों की क्या करनी है, prime factorization. We need to write them in form of prime numbers. So we will do prime factorization of 175
and prime factorization of 12,600. तो अगर हम 175 की prime factorization करें, so this is very easy. You will divide with 5, ठीक है? 5 3s are 15 and 5 5s are 25. Then it is still divisible by 5 7s are 35 and 7 1s are 7. तो इसकी prime factorization is 5 square या 5 into 5 into 7. ठीक है? Now this is a bigger number 12600. इसकी prime factorization करेंगे तो आपके सबसे पहले 2 से divide करेंगे 6300, right? फिर 2 से divide करेंगे 2 3s are 6 2 1s are 2 10 2 5s are 10 3150. फिर 2 से divide करेंगे तो 2 1s are 2 11 2 5s are 10 15 2 7s are 14. ये 10 होगा तो 2 5s are 10. So now can I divide it with 3? 3 से divide करेंगे 3 Yes, 5s are yes, 15. ma'am. ठीक है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है, नंबर्स को ऐड करना होता है. दिस इज 6 और 7 8 9 10 11 12. सो ये डिविजिबल है. 3 5s are 15, 3 2s are 6 15, 3 5s are 15. ठीक है? नाउ यू कैन स्टिल डिवाइड विद 3 बिकॉज इनका सम इज 12. So 3 1s are 3, 22, 3 7s are 21 and 3 5s are 15. अब अगर आप इनको ऐड करें तो this is 8 plus 5 13 आता है sum which is not in the table of 3. So now you cannot divide with 3. So you will divide with 5. 5 3s are 15, 5 5s are 25. 5 7s are 35 No, and then 7 7 and then 1s are 7. 7. ठीक है? अब आपने इसकी अगर आप इसके prime factors लिखें, because the space is less so I'm writing in form of index form. I'm writing 2 की power 3, sorry, 2 की power 3, 2 की power 3, then 3 की power 2, and then I'm Yes. writing 5 into 5 into 7 because we have written on the top also. ठीक है? अच्छा, now they are asking you कि इन दो numbers का आपने A और B find out करना है. ठीक है? अब आप किसी भी तरह इसको rearrange करें A और B के लिए कि कुछ नंबर्स आप A में डाल दें और कुछ आप B में डाल दें. ठीक है? कुछ नंबर्स आप कॉमन फैक्टर बना दें और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं बनेंगे डेफिनेटली. अब देखिए दिस 2 क्यूब, it cannot be a common factor because it is only in one number. So you can just give this 2 cube to, let's say, A. ठीक है? Now this 3 square is also a non-common factor, so you need to give it to one number. ठीक है? So let's say I'm giving this 3 cube 3 square to this number. Why I'm not giving this 3 square to A? Because ये सारा नंबर अगर आप A को दे देंगे ना तो A should not be bigger than A should not be smaller than 170. मतलब आपने इस तरह रीअरेंज करना है इनको. ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग इट अ फर्स्ट ट्राई. ये दोनों मैंने इनको दे दिए. ठीक है? आप देखिए आपके पास 5 स्क्वायर इज अ कॉमन फैक्टर. इसका मतलब है 5 स्क्वायर यहाँ भी आएगा और 5 स्क्वायर यहाँ भी आएगा, दोनों में आएगा. Why it is coming in both? Because it is a common factor. Now the 7 is also coming in both. ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई? Because this is logical. इधर आया 3 इधर आया, समझ आई है? Yes, ये बात ma'am. समझ आ रही है? इसको हमने कैसे डिवाइड किया? मोहित आपको Yes. समझ आई है बेटे? Ma'am. मोहित Yes, आपको ये ma'am. बात देखो, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, नाउ द कंडीशन इन द क्वेश्चन इज दैट वी नीड टू फाइंड आउट दो टू नंबर्स. सिर्फ एक कंडीशन है कि बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 175 है. हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो 175 से बड़े हों. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग 2 क्यूब टू A एंड 3 स्क्वायर टू B. अगर मैं 2 क्यूब B इसको दे देती ना 3 स्क्वायर B, तो ये नंबर छोटा बन जाता. फिर ना 175 से छोटा नंबर नहीं बनाना. ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग 2 क्यूब टू A एंड 3 स्क्वायर टू B, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन फैक्टर्स है ना, ये तो दोनों में आ रहे हैं. देखिए यू कैन सी HCF में भी आ रहा है 5 into 5 into 7 और इसमें भी आ रहा है. सो ये तो आपका कॉमन फैक्टर है, ये दोनों नंबर्स के पास है, इसीलिए ये HCF में भी है और LCM में भी है. नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज टू नंबर्स. अब आपके जहन में ये आ सकता है कि व्हाई वी आर गिविंग 2 क्यूब टू A एंड 3 स्क्वायर टू B. इसलिए कि अगर ये दोनों आप एक ही नंबर को दोगे ना तो ये छोटा रह जाएगा ना. 5 5 25 into 7 इज स्मॉलर देन 175. ठीक है? सो दे आर आस्किंग यू कि नंबर 175 से छोटा नहीं हो सकता. ठीक है? और वैसे भी ये इट्स अ कॉमन सेंस कि HCF अपने खुद से स्मॉलर तो नहीं हो सकता, लाइक खुद से बड़ा तो नहीं हो सकता. ठीक है? सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड सी व्हाट आर दोस टू नंबर्स. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इस कॉमन फैक्टर इज 25 into 7. सो ये कितना आता है? 14 15 16 175. ठीक है? 175 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटे? 175. और B इज 9 into 175.